Okay, now we go to a very important slide, perhaps the most important slide, from which a lot of questions regarding the reasoning, the fill in the blanks, MCQs, and figures, fill in the information in the figures could be asked in your quizzes, midterm, and final. So you have to pay special attention to this slide. So here we have a beam. If you look at it, a simply supported beam is being shown on which there is a force acting, and that force is basically what is happening is basically it has a fraction has been produced in the beam. And if you look at it and the figure B, if we cut that beam along a position X from the left hand side, what do we see? We see a bending moment and we see basically a shear force V that has been generated. Okay, so after cutting. Now, if you look at it in the figure C, because of this bending moment, what will be happening here is that you can see the bending stresses have been generated. These are the bending stresses. You can assume that basically these bending stresses they might be showing compression over here and tension over here, and as a result of this shear force V, if you look at it, this shear force V on this plane, it was the shear force acting, and you can see that this shear force has created a lot of shear forces along this area A, thus resulting in basically what is called as the shear stresses. And this shear force V acting on this area has created this shear stress. Okay, and because of this bending moment, there have been at this point the bending stresses have been generated. Okay, and if you look at it here in this schematic of this beam, what is shown over here is very important. These are the topmost fibers. We assume that the beam is made up of fibers. Topmost fibers, these are the bottommost fibers of the beam. Okay, topmost fibers and the bottommost fibers. Okay, so if you look at it, the longitudinal fibers on the top side of the beam are contracting. Okay, if you look at it, they are been contracting, and the longitudinal fibers on the bottom side of the beam, this bottom side of the beams have basically elongated. Okay, so the topmost will be shortened and the bottommost will be elongated. Then if you look at it, this black plate area is basically rectangular area. This is different from the top and the bottom because this thing will be called as the neutral surface. The axis passing through this neutral surface will be termed as this axis of the beam. We will call it as the neutral axis, and this is the neutral surface. Okay, ये आपका neutral surface होगा और ये axis जो pass कर रही है, this is the neutral axis. And again, since the structure is prismatic and it has got symmetry, so we will say this will be the centroid also. Okay, so neutral axis, neutral surface, you must be very much clear about that. And then along this neutral axis, perpendicular neutral axis is the symmetric axis. It is the symmetric axis because on both sides, if you see, there is symmetry. So this is the symmetric axis. And then the centroid for beam with symmetry and prismatic beam, there will be an assumption that the neutral axis and the centroidal axis will be coinciding. Okay, the neutral axis and the centroidal axis will be coinciding. Okay, and then we will assume that this is going to be our y-axis. Okay, then this a long straight from the neutral surface from here to here, we will assume it's x-axis. This is our y-axis, and then the depth will be treated as the z-axis. Okay, well, this is the assumption in most of the books. So this schematic you must clearly understand. Then the key points about this, I've told you about shortening, elongating. Then third, between the top and the bottom sides, there is a parallel surface within which fibers are neither contracting nor extending, and they are, it is termed as, due to the uneven elongation again of the fiber, the beam exhibits lateral or transverse deformation, that is termed as the deflection. Okay, so then the surface formed
The surface formed by the fibers that are neither contracted nor extended is called the neutral surface. This surface lies inside the beam between the top and bottom surface here. Okay, the beam fibers under the neutral surfaces are stretched and are in tension, while the beam fibers on the neutral surface are compressed and thus in compression. Okay, he's telling you about that. The intersection of the neutral surface and a cross section is called the neutral axis. Here it is, the neutral axis. This intersection is a line within the cross section and passes through the centroid. Here it is, centroid of the section. On the cross section, the area under the neutral axis is tension, while the area above the neutral axis is in compression. The same logic is trying to explain to you over again, but you must be very clear where is going to be tension and where is going to be the compression. Okay. Now again, a very important slide. Okay. All right. Now, the bending stresses that we talked about, they are also called as the normal stresses in the beam. So, the normal stress on the cross section of beam subjected to bending are calculated on the basis of the following assumption. These assumptions you must always take account of. A cross sectional plane taken normal to the beam, its axis remains plane throughout the deformation. Okay, and then the strains in the beam fibers vary linearly across the depth proportion to their distance from the neutral axis. They will vary linearly. They will not vary quadratically or parabolically. Okay, if you look at it here, the strains are varying linearly. Okay, up here, and the same the stresses are also varying linearly. Then he's telling you Hooke's law is applicable to the individual fibers, that is, the stress is proportional to the strain, okay, which means we are staying within the proportional limit and Hooke's law is well applicable. And what will be the relation for this normal stress? You can say normal stress or bending stress, the same thing. It will be sigma is equals to my upon I. From where it is formed, you have already done in your second year, you have derived this, I assume, in your second year solid mechanics one, it is called as the bending relationship, and it is called also called as the engineer's bending relationship. And what is it? Sigma upon y is equals to m upon I, and then there is another terms. It is equals to E upon R. So sigma upon y is equals to m upon I equals to E upon R. What is E? Is the modulus of elasticity. What is R? R is the radius of curvature of the beam. Then what is M? M is the bending moment acting on the section. I is the second moment of area or the moment of inertia of the cross section of the beam under consideration. What is sigma? Normal stress at any arbitrary point on the section. Okay. What is I? I is the moment of inertia. You know how to calculate moment of inertia of the beam. You have already done in your first year statics. R.C. Hibler, I think chapter 10. If you haven't done it, you don't know, you can go to your first year statics, R.C. Hibler, chapter 10, to calculate the moment of inertia of the beam or any section. How it is calculated? If it is moment of inertia about the I-axis to be calculated, it will be equals to integral of area y square dA. Okay, it is y square dA. Okay, then if you don't want to go to your second year statics, these are some moment of inertia of some very common cross sections which we will be frequently encountering in our solid mechanics too. You should already know that moment of inertia for a rectangular cross section is it's passing along this is the centroidal axis of this rectangular cross section. We can assume maybe it's also the neutral axis as well. So it will be 1 by 12 dHq. This will be the moment of inertia. If we have a square cross section, so for example, then it will be a by 2, and this is also a, and this a by 2 is also a. So this section is not rectangular; it is a square section. It will be moment of inertia about this axis. It will be 1 by 12 a4. If you've got a circular cross section, moment of inertia will be, if it's tire consideration, it will be pi by 64 d4.
But if radius is under consideration, it will be pi by 4 r4 for a solid cylindrical structure, a rod structure. If it is hollow in shape, it will be pi by 4 r outer dia, r4 outer dia minus r4 inner dia. So this is very important. You must actually, I think, by learn by heart all these things. Okay, so now we go to again very important slide. The importance of there's another new terminology will be considered over here is uh, in basically here which will be frequently found as the section modulus of the beam will also come over here. So the second moment of inertia of the cross section is an equivalent geometrical quantity. Again, remember, second moment of area or the moment of inertia. These are the geometrical quantities. And moment of inertia आप define कैसे करेंगे? It is the resistance to bending at any specific cross section of the beam under consideration. Okay, is equivalent to geometrical quantity to the polar second moment of inertia J in torsion in the cross sectional area. So the maximum normal stress occurs at the, again if you look at it here, it says the maximum normal stress will occur at the furthest fibers from the neutral axis, that is at y equals to y max. So if you look at it here in the next slide, where is the maximum bending stress or normal stress acting? If you look at it, this is your arbitrary. The beam is not prismatic. Okay, so this beam is not prismatic. So again, it will not be passing through the centroid in the center. Okay, so if here the bending stresses, positive bending stresses are generating, so you see the maximum magnitude of bending stress is furthest from the axis. So if it says here the maximum normal stress occurs at the furthest fiber away from the neutral axis, that is at y equals to y max. So this relation sigma equals to m y upon I, but y, if y is y max maximum, so sigma bending stress will be, because the magnitude of will be सबसे ज़्यादा, तो sigma will change to sigma max equals to m y max upon I. So if the same equation, if we write m and y, if we divide it here, so it becomes a ratio of I upon y. Okay, it becomes a ratio of I upon y max. So it comes out to equals to m, and this ratio I upon y max is called W, where W is equals to I upon y max is called the elastic modulus of the section. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? Ratio of moment of inertia to the height y, maximum height y max, it is called as and what is y max? It is the distance from the neutral axis to the maximum uppermost or lowermost fiber, depending upon सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, it will be called as y max. But this ratio I upon y is called as the elastic modulus of the section, या इसका एक और नाम हम बुक्स में आप देखेंगे, इसको हम elastic modulus of section कहेंगे, or we will call it as the section modulus of the beam. Very important thing, because it is this parameter tells you about the beam's efficiency, and whenever you want to select a beam in the real world design or analysis, you will be considering the elastic modulus and section modulus of the beam. So an efficient beam section has a small ratio of cross section area and elastic modulus of section A upon W. It's telling you about efficient beam has a small ratio of cross section area A, यानी कि उसका cross section area कम होगा, and the elastic modulus section A ये कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी बेंडिंग स्ट्रेसेस कम हो. सो A by W. Thus in terms of normal stress, अगेन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये आपका रेशियो I अपॉन वाई में अगर आप और से देखें तो ये आपके पास m y अपॉन I, तो बेंडिंग स्ट्रेस को अगर हमने कम करना है तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ाना होगा, आपको डिस्टेंस टू बेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए. और यहाँ पे I अपॉन वाई W, अगेन जितना आपका अगर आप और से देखें इस रेशियो W को अगर हम ओवरऑल अगर हम इसको एनहांस करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आपकी कम हो जाएगी, इन्वर्सली रेशियो है. तो ठीक है, दस इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एन एफिशिएंट सेक्शन कंसंट्रेट्स एज मच मटेरियल एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. ओके, जितना आपका
न्यूट्रल एक्सिस से आपका मटेरियल अवे होगा तो आपके पास वो सेक्शन एफिशिएंट होगा. दैट इज व्हाई आई शेप सेक्शंस आर वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस वेटिंग. एन एफिशिएंट सेक्शन कंसंट्रेट्स एज मच मटेरियल एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है. The elastic modulus of section reflects the geometrical properties of section and is different from the elastic modulus of materials. Okay, materials का अलग, which depends on the material properties. Okay, now again it's trying to explain you from your sigma max क्या है, maximum normal stress in the fiber, और यहाँ पे उसने वेक्टर्स को प्लॉट शो कर दिया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का. तो आपके पास अगर हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई. ठीक है ना. और कुछ बुक्स पे आप उसको बेसिकली माइनस भी हम ऐड कर देते हैं, और माइनस ये होता है अगर आपका बेंडिंग मूवमेंट डिपेंडिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, अगर नेगेटिव ले दें तो आपने माइनस वाई ऐड किया हुआ होगा. ठीक है. और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम सी अपॉन आई. लेकिन हम वाई एम वाई अपॉन आई का सी क्यों कर दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर, क्योंकि मैक्सिमम के लिए अभी मैंने आपको बताया आप वाई वाई के बजाय, वाई तो क्या है कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन सी जो है वो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा. जैसे यहाँ से जब आप ये सी लेंगे तो सिग्मा आपके पास सिग्मा नहीं रहेगा, सिग्मा मैक्स बन जाएगा, और आपके पास ये बन जाएगा एम सी अपॉन आई. वाई इज चेंज टू वाई. ठीक है. और अगर हम ये आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस का आ गया, और बेसिकली अगर स्ट्रेस इज बेंडिंग स्ट्रेस विल आल्सो जनरेट स्ट्रेन्स आल्सो. तो आपके पास स्ट्रेन्स के लिए हम बात क्या करेंगे, वो सेम आपके पास बेंडिंग स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर रहे हैं अगेन उसी पॉइंट से. तो आपके पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन मैक्स के ऊपर आ रही है यहाँ पे, और अगेन हम इसको कह सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस का वाई अपॉन सी एप्सिलॉन मैक्स. और वाई अपॉन सी क्यों है कि अगर हम बेसिकली एप्सिलॉन मैक्स कब होगा, जब आपके वाई की वैल्यू सी हो जाएगी, तो आपके पास एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन मैक्स के ऊपर. तो बेंडिंग स्ट्रेस आपके पास ये आ गई. और यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया अगर आपने बेंडिंग, अगर कहीं भी किसी भी बीम के अंदर, अगेन ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, किसी खास पॉइंट पे अगर आपको स्ट्रेस निकालनी है, सपोज करें यहाँ पे निकालनी है, यहाँ निकालनी है, तो आप ये रिलेशन यूज कर लेंगे. वाई की आपके पास वैल्यू दी हुई होगी और सी भी आपको कैलकुलेट किया होगा आपने, यहाँ पुट कर देंगे तो आपका सिग्मा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैक्सिमम सिग्मा मैक्स के ऊपर. और वाई बेसिकली शो कर रहा है अगर बेंडिंग मूवमेंट आपका नेगेटिव आप वहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इसलिए आपने उसको नेगेटिव कंसिडर किया हुआ. अब अगेन ये सवाल देख ले, determine the moment m that will produce a maximum stress of 10 ksi on the cross section. अगेन ये आपको उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, और इसका आपने क्या निकालना है, मूवमेंट m निकालना है, लेकिन उसने आपको बेंडिंग स्ट्रेस दे दी है 10 ksi, यानी कि सिग्मा मैक्स दिया हुआ है आपको ऑन द क्रॉस सेक्शन, और ये आपका क्रॉस सेक्शन है. तो अगर आप ये देखें, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, बेसिकली अगेन इट्स अ टी सेक्शन विद फ्लैंजेस. ये आपके पास टी सेक्शन है, यहाँ पे उसके उन्होंने दो एक हॉरिजॉन्टल फ्लैंज और दो वर्टिकल फ्लैंजेस दिए हुए हैं. तो अब अगेन डिटरमाइन द मोमेंट m दैट विल प्रोड्यूस अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 psi ऑन द क्रॉस सेक्शन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका स्टॉप सरफेस है, इसका सेंट्रॉइड क्या है. दोनों तरफ सिमेट्री है, तो आपका x बार तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया अबाउट द y एक्सेस. x बार तो जीरो, और y बार क्या होगा आपके पास, वो कैलकुलेट करना होगा. अगेन अगर आप जाएँ अपनी फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स का चैप्टर 9 सेंट्रॉइड्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी खोलें, तो वहाँ से अगर आप ये भूल गए हो तो आप निकाल सकते हैं चैप्टर को और रीड कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको मिल गया y बार इक्वल टू समेशन ऑफ y हैट इनटू a और समेशन ऑफ द एरिया a. ठीक है ना. और a एरिया y इज बेसिकली द y बार इज बेसिकली द सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंटायर सेक्शन, जबकि y हैट क्या शो करता है, दीज आर सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकल सेक्शन. ओके, तो ये आपने याद रख लेना है. तो आपके पास बेसिकली अगेन पहला सेक्शन उसने कौन सा शो कर रहा है, 3 प्लस 5 इज 3 और 0.5 और 0.5 यहाँ से, तो ये हो गया 4, और आपके पास उसके अलावा इसकी थिकनेस कितनी है 0.5, तो ये एरिया हो गया. अगेन टॉप से इसका सेंट्रॉइड कितना होगा, 0.5 का आधा क्या है 0.25, प्लस अगेन ये दो उसके जो कान दिए हुए, उसको कान कहते हैं, या उसके दो वर्टिकल फ्लैंजेस जो दिए हुए हैं, ये दो दो उन्होंने शो कर दिया, प्लस इसके उन्होंने आपको यहाँ पे शो कर दिया 2 इंटू इसका एरिया आपके पास क्या होगा यहाँ पे, इसके यहाँ से हाइट इसकी कितनी है 3, और इसकी थिकनेस कितनी है, ये शो कर रहा है थिकनेस कितनी है 3 इंटू 0.5. और यहाँ पे इन्होंने इसका बेसिकली अगर आप और से देखें
तो इसकी टोटल हाइट कितनी है? 3। इसकी टोटल हाइट कितनी है टॉप सरफेस से यहाँ से? 3। 3 का आधा कितना होगा? 1.5 और प्लस 0.5 फ्रॉम टॉप सरफेस, तो यहाँ से आपके पास ये 2 आ गया वाई हेड। प्लस आपके पास अब ये आपके पास ये आ गया वर्टिकल। वर्टिकल ये बेसिकली कितना इन्होंने दिया हुआ है आपको? पूरा 10 का आधा कितना होगा? सेंट्रॉइड की अगर हम बात कर लें 5, और ऊपर टॉप सरफेस की कितना रन दिया हुआ है? अगर आप और से देखें तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस 0.5 है 5.5, और एरिया इसका कितना होगा? 10 इंटू 0.5। तो ये आपके पास बन गया समेशन ऑफ वाई हैट इंटू ए, आपने सब कर दिया। और एरिया अगेन सारे लोकलाइज्ड एरियाज को हम ऐड कर ले आपके पास सेक्शंस के, तो टोटल आपके पास सेक्शन का आ जाएगा 4 इंटू 0.5, ये वाला टॉप वाला। दूसरा 2 इंटू ये हो गया 3 इंटू 0.5, और दोबारा 3 इंटू 0.5, तो कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 0.5, प्लस इसका कितना हो गया 10 इंटू 0.5। तो ये आपके पास बन गया। इसका आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3.4 इंच इसका सेंट्रॉइड वाई बार आ गया। अब अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टोटल एक्सेस निकाल लें, तो ये आपके पास आ गया 1/12 अगर आप निकालें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अगेन बी डी क्यूब प्लस का 1/12 इंटू 4 इंटू 0.5 वाला, तो यही होगा आपके पास 4 इंटू 0.5 बी डी क्यूब प्लस का एरिया 4 इंटू 0.5, अगेन वही होगा आपके पास 4 इंटू 0.5, और इसका सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड डिस्टेंसेस निकालने होंगे। तो पहला सेंट्रॉइड जो आया 3.4, यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस कितना आ रहा था आपके पास? 3.4 आ रहा था, और उसके बाद आपने क्या किया? माइनस कर दिया। इसका सेंट्रॉइड कितना था आपके पास? 0.5 का आधा कितना? 0.25 कर दिया, तो ये आपके पास हो गया डी स्क्वायर। फिर प्लस आपने कर दिया इन दोनों का 2 इंटू 1/12 बी डी क्यूब आ गया आपके पास, प्लस का एरिया अगेन इसका कितना होगा आपके पास? एरिया आपके पास 0.5 इंटू 3, ये आपका 3 है और ये इंटू 0.5 हो गया। फिर आपने क्या करना? सेंट्रॉइड टू सेंट्रॉइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 3.4 तो आपका लोकलाइज पूरे सेक्शन का है आपके पास, और प्लस आपके पास वर्टिकली यहाँ से कितना हो जाएगा? 1.5, और उसका बेसिकली कितना हो जाएगा? टॉप सरफेस से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 0.5, तो ये आपके पास 3.4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस का हमने कर दिया 1/12 बी डी क्यूब, और ओवरऑल इस बड़े सेक्शन की बात कर रहे हैं 1/12 प्लस का एरिया इतना किसका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0.5, और प्लस इसका यहाँ से ओवरऑल तक टॉप सरफेस तक कितना हो जाएगा? 5 और आधा 5.5 माइनस वाई हेड कितना है आपका? 3.4। तो ये आपके पास अगेन कर्ल एक्सिस थ्योरम 1/12 बी डी क्यूब प्लस का एरिया इंटू डी स्क्वायर। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस आपका कितना आ गया? 91.73 H4। यहाँ तक आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो अप्लाई द फ्लेक्सिबल फार्मूला। अब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या है? एम सी, क्योंकि वाई नहीं है, क्योंकि आपने मैक्सिमम टॉपमोस्ट सरफेस से देख रहे हैं, तो एम सी अपॉन आई। तो अगेन आपने कर दिया मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 10 के एस आई। एम हमें नहीं पता, सी कितना हो जाएगा आपके पास? अगेन टॉप मोस्ट हाइट फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? अगर आप और से देखें तो बेसिकली इन्होंने टोटल हाइट उसकी पूरे सेक्शन की दे दी है, तो वो कितना हो जाएगा? 10.5 माइनस आपके पास 3.4। अगर आप और से देखें तो 10.5 माइनस 3.4, ये आपके पास हो गया। इसको माइनस कर देंगे अगर हम, तो और आई कितना निकालता है? 91.73। तो यहाँ से एम कितना आ गया आपके पास? सिंप्लीफाई कर दें, एच एस के अंदर आया 129.2 किलो पॉन्ड्स इंच, और अगर उसको फीट में कन्वर्ट करना है तो आप बेसिकली ये बन जाएगा, कर देंगे तो ये बनेगा 10.8 किलो पॉन्ड्स फीट। ठीक है।